कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट you will be able to earn up to 30 LPA कि why you have to choose data science as your career। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी और मूविंग फॉरवर्ड इसके आने से हमारे जॉब रोल को एज अ डेटा साइंटिस्ट कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटी के सबसे ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन के बारे में, जो कि है डेटा साइंस। अभी हर फोर्थ कैंडिडेट जो आईटी में अपना करियर बनाना चाहता है, या तो वो बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस प्रेफर करता है। तो हम इस पूरे वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि चाहे आप एक फ्रेशर हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, या आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, तो व्हाट विल बी द सिनेरियो, व्हाट विल बी द रोड मैप, व्हाट विल बी द ब्लूप्रिंट, जिससे कि आप एक रॉ बिगिनर फ्रेशर से अपनी जर्नी डेटा साइंस के करियर में स्टार्ट कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज डेटा साइंस? सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा साइंस होता क्या है, और हम इसे समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। लेट अस से कि आप कोई एक फूड डिलीवरी ऐप ऑलमोस्ट रेगुलर यूज करते हैं और आप अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं। अभी उस एप्लीकेशन में लेट अस से जो आपको नहीं पता कि आप साउथ इंडियन फूड ऑर्डर करते हो, दैट इज ईदर ट्यूसडे और वेंसडे और थर्सडे। अभी फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव, कंपनी को प्रॉफिटेबल रेवेन्यू कब मिलेगा? जब वो अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को, उसके पैटर्न को, उसकी एनालिसिस करके वो आपको सिमिलर रिकमेंडेशंस दिखाए। यानी कि उसने एक पैटर्न नोटिस किया कि आप सर्टेन डे सर्टेन टाइम स्पेसिफिक रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करते हो, देन ही विल मेक द सेम रिकमेंडेशंस टू यू एंड नॉट इवन स्पेसिफिक टू द साउथ इंडियन फूड। ये आपका डिपेंड करता है, आप स्वीट खाना चाहते हो, लेट अस से कि यू आर ऑर्डरिंग सर्टेन स्वीट्स, तो वो आपको सेम स्वीट्स के ही रिकमेंडेशन दिखाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और एक्यूरेटली आपको बताने की कोशिश करूं, तो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा जो फीड है वो हर किसी की अलग होती है। क्यों? क्योंकि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सबसे ज्यादा अपनी आई बॉल्स किस रील पे लगाते हो, सबसे ज्यादा वॉच टाइम किस रील का है, उस रील की कैटेगरी क्या है। That might be a fun reel, that might be a startup related reel, some sort of शायरीज और poetic reel. So accordingly वो आपके कंज्यूमर पैटर्न को एनालाइज करते हैं। तो ये जो काम है कंज्यूमर के पैटर्न को एनालाइज करना और एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देना। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस व्हेन आई एम सेइंग दैट सिंपली मीन्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंस्टाग्राम सिर्फ मेरे लिए ही काम कर रहा है, जो मुझे अच्छा लगता है सिर्फ वही दिखा रहा है, तभी तो मैं उस ऐप को और ज्यादा यूज करूंगा, और जितना टाइम मैं उस ऐप पे स्पेंड करूंगा उतना ही उस कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो ये काम एक कंपनी के लिए करता है एक डेटा साइंटिस्ट बैकएंड में एल्गोरिथम, उनका डेटाबेस, कंज्यूमर बिहेवियर, उनके पैटर्न को लेकर के एक एनालिसिस करके कंपनी को एक विजुअल फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो प्रॉफिटेबल डिसीजंस ले पाए। डेटा साइंस में जो टूल्स हम यूज करते हैं, दोज आर लाइक प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन, डेटाबेस में वी यूज एसक्यूएल, मूविंग फॉरवर्ड वी यूज मशीन लर्निंग इन ऑर्डर टू मेक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम एंड लाइक टू सॉर्ट द डेटा सेट्स। गोइंग फॉरवर्ड अभी हम समझते हैं कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप देख पा रहे होगे, दैट विल बी कलेक्टिंग, क्लीनिंग एंड एनालाइजिंग द लार्ज डेटा सेट्स। लार्ज डेटा सेट वो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी कि वो डेटाबेस के लिए क्या यूज करना है। दैट मे बी अ NoSQL, दैट मे बी अ रिलेशनल डेटाबेस, दैट मे बी SQL, दैट मे बी एन एक्सेल शीट। सो especially for the large data sets, data scientist came into picture. Second one is visualizing data through graphs, charts and dashboards.
यानी कि जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसकी एनालिसिस करके हम सिंपलिस्टिक फॉर्म में विजुअलाइज करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड्स। तो दिस इज हाउ, जिससे कि ना वो डिसीजंस लेने में आसानी हो पाए, हम उस डेटा को सिंपलिस्टिक तरीके से समझ पाए। अभी एक डेटा साइंटिस्ट प्रिडिक्शन किस बेसिस पर करता है, रिकमेंडेशन किस बेसिस पर करता है, तो उसके लिए वी यूज मशीन लर्निंग। तो machine learning and their algorithms will be used in order to make predictions out of the previous raw data sets. Next, data scientist has to work with lot of teams, like he has to collaborate with multiple teams, जिसमें कि सबसे important होता है आपका marketing, finance, operations and the project management team. So data scientist को obviously like data का role हर डोमेन में है, सो अकॉर्डिंगली ही हैज टू कोलैबोरेट विद ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इन द फिफ्थ पॉइंट वी विल सी द सेम थिंग हैज बीन रिपीटेड लाइक जो हमने सेकेंड पॉइंट में किया था, दैट वी वर विजुअलाइजिंग द डेटा इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, चार्ट एंड डैशबोर्ड। दिस इज बिकॉज कि हमको एक्सप्लेन करना होता है द सेम टू अवर नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स। नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स यानी कि वो क्लाइंट्स, इन क्लाइंट्स के लिए आप ये डेटा साइंस को यूटिलाइज कर रहे हो, तो आपको उन क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करना होगा, तो आप उनको एल्गोरिथम्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर देम, क्योंकि वो तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स हैं। तो इसके लिए चार्ट, ग्राफ्स और डैशबोर्ड इज द इजीएस्ट फॉर्म जिसमें हम उनको डिसीजन मेकिंग तरीके से समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नेटफ्लिक्स से समझते हैं कि नेटफ्लिक्स में जो कंटेंट होता है that will be different for the different age groups. Let us say kids के लिए category different है, moving forward like जो categories हैं that will be different for the different age group. अभी हमें ये समझना होगा, अगर हमें अपने स्टेक होल्डर को समझाना है कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे, कि आपकी किस एज की कैटेगरी किस कंटेंट में इंटरेस्ट दिखा रही है, तो इसको हम विजुअलाइज करके चार्ट की फॉर्म में दिखाएंगे। लेट अस से कि करंटली like 30 to 35 एज ग्रुप इज शोइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द हॉरर कॉमेडी, देन ग्राफ इज गोइंग हायर, तो उस ग्राफ की फॉर्म से ही विल बी लाइक ओके नाउ वी नीड टू फोकस ऑन हॉरर कॉमेडी सो दैट वी कैन इंक्रीज अवर सब्सक्रिप्शन बेस. So this is how like the patterns has been made, the predictions has been made, and in the simplistic way you will be able to explain to your clients or stakeholders. Sixth one, almost every job has a lot of upgrades. Similarly, it goes to the data science. So you have to keep yourself updated with the latest libraries, with the latest tools that are going in the market. So accordingly, you have to make continuous improvements in your models so that like you can produce better results and you can produce better accuracy. Now let's talk about the most lucrative part of data science. क्योंकि data science that involves programming, that involves critical thinking, analyzing pattern, so it's a very exceptional job that requires a kind of unique talent, somebody like who is the individual contributor, and because of the uniqueness of the skill, the pay grade in data science is really at the next level. It totally depends कि how proficient you are. तो अगर मैं बात करूं, if you are starting as an intern, then even you can get 25 to 30k minimum in India. Going forward, if you are starting as a core fresher in the full-time job, you will be able to get up to 45 to 50,000. If I talk about going forward, like with 1 to 3 years of experience, you can earn like 12 to 15 LPA. Going forward, as a senior data scientist, you will be able to earn up to 30 LPA. And the next step will be, let's say you became the chief data scientist, then there is no limit, like chief data scientist used to earn in CRs. So it totally depends upon you, how you are acquiring skills, how you are keeping yourself updated in the job market, and based on that, you will be getting the best pay out there in the IT industry as a data scientist. Now let us understand why you have to choose data science as your career. अभी आपने देखा होगा कि मोस्टली हम सबका प्रोफाइल सोशल मीडिया से लेकर के लिंक्डइन तक एवरीथिंग लाइक अबाउट आवर फोटोज, आवर बायो, आवर एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन.
हम में से हर किसी का डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है जो एटलीस्ट कोई एंड्रॉयड फोन या कुछ भी चलाता है XYZ. तो when everything is going digital, तो the future will be lying in a data scientist hands. So it is going to be like, obviously it is currently and in future also, this profile is going to be the highest in demand. And because of the sensitiveness, because of the intelligence that is required in this work, your pay grade will always be best in the industry. And the next point is, क्योंकि इस जॉब में ना that does not require that you have to go daily to the office, because end of the day what matters is what results you are producing. So for this nature of job, you will be getting work from home very easily. Even in the market, 70% of the job of the data scientist available, those are either remote or hybrid. And like if you like challenges, then this is the most important, that you will be working and facing the real life challenges. You will be analyzing data, everything will be new, you will be getting every time the raw data, you will be getting the juggled data, and from there you have to make out some like the decision making, that predictions out of it. So this is going to be very challenging, very exciting job if you like challenges. अगर मैं बात करूं करियर ग्रोथ पाथ की, तो समझने की कोशिश करते हैं कि किस लेवल पे what you have to do and what will be your job title, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी कि once you will be growing, so how your job responsibilities will be growing simultaneously. So let us say you will be starting as a data science intern. As a data science intern, you will be working on Python programming, understanding concepts, understanding libraries, understanding multiple tools, and working on the like average or small data set. Then moving forward, you will become a junior data scientist. As a junior data scientist, आप काम करोगे simple models पे, and from that simple models you will be also learning कि how to handle supervised problems. Now in like 1 to 2 years you will become the core data scientist, जहाँ पे you will be working on machine learning. From that machine learning you will be working on large data sets. Also you will be working on the large projects, you have to make predictions. So this is how like your path from the intern or like from a fresher or beginner, junior data scientist to data scientist goes on. Now moving forward, once you became senior data scientist, then the role is you will be leading a team of data scientists, you will be solving complex problems. Going ahead, also you will be guiding with the business strategies so that they can make profitable decisions. तो अभी समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी और मूविंग फॉरवर्ड इसके आने से हमारे जॉब रोल को एज अ डेटा साइंटिस्ट कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और हाउ आवर प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीजिंग. लाइक लॉट ऑफ पीपल हैव like this phobia कि AI will like eat our jobs and all. So here I would say that AI is only going to make your job productive, and he will be filling out your loopholes so that you will be able to do your job efficiently. If I talk about कि data science में AI how is going to help you, so here is the first point, that let us say कि you got some raw data. In that raw data there are some incorrect values or there are some blank data, so manually you have to go through each and everything, but with the help of AI that will really help you out in missing or handling incorrect values automatically. Second, AI might recommend you the best way to visualize data depending upon the domain, depending upon our need. Let us say you made on some conclusion, now how to represent that visually, here AI can help you. Next, AI will be helping you in model building and selection. With the help of AI tools, you will be able to use the right algorithm very quickly. Next, how it will be helping in NLP, that is natural programming language. Here it will work with the text data for chatbots and the sentiment analysis. Last but not the least, AI will be helping you out in forecasting and prediction, where AI tool will be helping in the sales prediction, the fraud analysis. So this is how like AI will be helping you out at every step,
so that you will be able to do your job efficiently. And in the end, one thing I would say that AI is your friend, not enemy. अभी समझते हैं कि एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए बिगिनर से, जहां से आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आओ या आईटी बैकग्राउंड से आओ, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, लाइक यू आर अ कोर ब्लैंक पेपर और रॉ फ्रेशर, तो आपको कितना टाइम लगता है? तो जो हमारा प्रोग्राम है डेटा साइंस का, दैट टेक्स 6 months, जिसमें कि एक रॉ कोर फ्रेशर को या दैट मे बी अ वर्किंग प्रोफेशनल और एनीवन, हम एक प्रोफिशिएंट डेटा साइंटिस्ट बना सकते हैं, जिसमें यू विल गेट द कॉन्फिडेंस दैट यू एक्वायर्ड सर्टेन स्किल्स। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द मॉड्यूल्स दैट वी कवर इन द 6 months, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, वी स्टार्ट विद वेरी बेसिक कि व्हाट इज डेटा साइंस, व्हाट आर द डेटाबेसेस, going forward what are application servers, what are like the difference between RDBMS, NoSQL. It's like basic that we used to give you the basic understanding like how the IT industry works. Then going forward we will be giving you scenario based applications like real life, real world applications where what will be the use of data science here. You will be figuring out yourself what we can do as a data scientist, so where it will develop your critical thinking. Now going forward, what is the core difference like between the data analyst and the data science? Like going forward, data science is the successor of data analyst. Like if you're starting your career as a data analyst, then going forward you can become a data scientist. For that you have to learn programming languages or you have to learn machine learning. So like we will be giving you end-to-end understanding ki how does the analysis, how does the science works. Now going ahead, we will be starting with the basic programming of Python, understanding the tools, understanding the libraries. So this is how we will be covering our module 1. In the module 2, we will be going a bit deep down. In the deep down, we will be covering libraries such as Pandas, NumPy. We will be reading and filtering the data set. Going ahead, we will be handling the missing values, and the most importantly, we will be understanding how to clean data so that we can start understanding that after removing all the null values, all the incorrect values from the core raw data set. After cleaning data, we will be going forward in our third module that will be covering data visualization. Data visualization that consists of representing your data in the simplistic form of chart, graphs, dashboard, and here we will be representing with the help of Matplotlib and Seaborn. Also, we will be creating line, bar and pie chart. And the most importantly, to make our data exciting, we will be learning how to visually represent and how to visually tell it in the form of story, like storytelling, so that we can easily explain data. So we will be learning visual storytelling with the help of data. In our next module, we will be learning a lot of data science is mathematics. So if you love mathematics, then data science is something that for you. So in data science, mathematics एक major role play करता है. So mathematics के कुछ concepts जो कि data science में help करते हैं, जो कि इस module में हम cover करेंगे, like stats. Stats में हम समझेंगे mean, median, mode. Going forward, we will be covering up basic probability and the concepts. We will be also covering real life stats and their use cases. Then after making our command over the maths and after making our command on the concepts that will make you the best data science, in the next module we will jump to the machine learning that will be the core foundation of data science. And in the machine learning, we will be understanding how to supervise and unsupervised learning. Going ahead, in the second point, we will be learning linear regression, KNN and decision trees. Going forward, we will be understanding the introduction to the model evaluation. In the fourth point, it is going to be the mini project where we will be showcasing the model that we had worked on over the LinkedIn and the resume. Going forward,
we will be covering advanced machine learning concepts such as logistic regression, random forest, and SVM. Second, overfitting and underfitting. Third, accuracy prediction and confusion matrix. So in the final module, we will be working on the databases, and in the database we'll be covering SQL basics, we'll be covering query writing, we will be covering join groups and how to filter it. Going forward, we will be covering how to connect Python with SQL. So after this module, like you had learned almost all the concepts, the databases, the mathematics that is required to become data scientist. Now it's time where you have to work on some real life projects, and that we called capstone project. So our experts will be giving you few projects and you will be showcasing your skills and mentioning the same project in your resume for your personal branding. So with the help of those projects, once you will be appearing in an interview, like we have more than 500 plus hiring partners, so that with the help of those projects, what work you have done, it will be really easy for them to understand and analyze your competency, and the chances of your selection will be very high. Okay, now let us talk about the placements. Let us say your learning part has been completed, you have completed the project, you had showcased it in your resume. Now what? Now, how Careerfly or how we will be helping you out is, we will be optimizing your LinkedIn, we will be helping you out in writing your resume. Going ahead, the project that you had mentioned in your resume, we will be cross-checking it whether this is something that is meeting the market standards or not. And finally, you will be facing the mock interview, because lot of candidates that we had seen, they have interview phobia. That might be because they have, like that inferior personality, that they are not confident about their communication skills, and there are like many secondary skills that is required apart from like the data science skills, the primary skills that you are learning with us. So what we will recommend, that if you feel like your communication is not up to the mark, then along with like the data science training, you can also opt for Careerfly Comms program. In the Careerfly Comms, it's very affordable, where you will be working on your personality, you will be learning how to answer confidently in an interview, and your communication skills. Like if you will be coming to us with 3 out of 10, then in the course of 2 to 3 months, you will easily become 6 or 7 out of 10. That will give you the confidence now you are a job ready candidate, and you will be able to articulate or explain your data science skills effectively by communicating properly in English. So this is how we will be wrapping up each and everything by enrolling you in our program, by giving you 360-degree development, covering all the concepts of data science, showcasing it in your resume, giving you the PDF of the case studies, going forward optimizing your LinkedIn, working on your resume, then like giving you the interviews. And we are very confident that it's a mutual approach, 50-50, where we will be doing our part sincerely, you will be taking your sessions sincerely, and we both will make it. You will gain that confidence in 6 months. Okay, now I have acquired certain skills, and now I am a valuable resource, and the company that I will be joining in, I will be adding some value to it. So this is what confidence that we will be like bringing from you. So this is how, like, I think I had explained you how you will become a data scientist, what's the blueprint, what's the journey. So if you feel like, okay, this career is for you and this is something, or like you have some questions, then you can put it in the comment box. If you wanted to talk to our counselors, like it's 100% free, then you can just click on the link in the description. You can put down your detail. आप description के link पे click कर सकते हो, उस पे अपनी detail डालेंगे. Our counselor will be giving you counseling free of cost, and we will be checking your eligibility whether you are fitting for this program or not, and you will be getting the right guidance from us. So in the last, guys, thank you so much for watching the video. If you have any questions, put it in the comment box and our team will be guiding you from there. So thank you so much everyone once again for watching my video. Have a nice day.